हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड स्पेशल थैंक्स टू मेंबर्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। एज अ टोकन ऑफ थैंक्स ये वीडियो आप लोगों के लिए पहले रिलीज होगा देन फॉर द जनरल पब्लिक। So let's look at कि in this video we are going to take a look at टाटा स्टॉक्स। टाटा स्टॉक्स को हम लोग देखने वाले हैं। सो टाटा स्टॉक्स को देखने के लिए जो सेटअप दैट आई एम गोइंग टू यूज इज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। दैट मीन्स माय प्रोप्राइटरी सेटअप एसडी रेनबो वेव वर्जन 1। इनवाइट ओनली में जाके एंड उसमें मुझे अप्लाई करना होगा। सिंस आई एम डूइंग स्टॉक्स, फर्स्ट स्टेप इज कैश स्टॉक्स वीकली और मेरे टीएमपीवी स्ट्रेटेजी में वीकली चार्ट पे। Secondly, I will need to gauge the momentum. I'll need SDRSI X. I will apply it regular setup. And I will also require SD Rainbow Wave version 2 to check the overall risk of the market. So now I have pressed SD Rainbow Wave version 2. And in that, I am going to apply the Risk Master. So far I'll keep Rainbow 2 in hide. Later on, I'll bring them and look at the overall risk suggestion by the market. So first we are going to take a look at the daily chart to Nifty 500. Nifty 500 कोई भी stocks में decide करने से पहले Nifty 500 is the first one. तो हम लोग वापस चले जाएंगे Fountain of Gold यानी mother setup which can be applied on index as well. So currently what I'm seeing as overall is not very bullish. Buy trade win probability is around 39, but it also not very bearish. 18% है sell का win probability. तो इस मामले में more buy support trades will be preferred than buy breakout and थोड़ा risk management यानी quantity management करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. Once this is understood, let's remove this and let's bring the V2 risk meter. With the V2 risk meter, let me make it large so all of you can see. This measures the overall risk of the market. It is independent कि मैं टाटा स्टील में अप्लाई करूं या निफ्टी 500 में अप्लाई करूं. The readings are going to remain the same because it is measuring the overall market risk, not an individual stock specific risk. Time frame, yes, that will have changed. I've kept it that way that it can still be impacted in some part of the meter, so it can be used for shorter time frames, but largely this is meant for daily and higher, and this is measuring the overall risk. So overall risk जो मैं मुझे दिख रहा है कि equity drawdown relatively much after the mega sell-off. Once again safety time is going on, so this is a good measurement of risk. So two level of risk management. One is अगर निफ्टी 500 buy होता हम लोग सुपर डिग्री एग्रेसिव होते अगर रिस्क मेरे साथ है. सो रिस्क फेवरेबिलिटी है बट निफ्टी 500 बायर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें रिस्क मैनेजमेंट करना होगा. नाउ लेट्स स्विच ऑफ द V2 and bring the V1. This is the Mr. Multimeter. जैसे that is the risk meter, this is the multi-asset meter. So this is the multi-asset में first step we are going to look at the weekly chart. और weekly chart में क्या दिख रहा है, कितना टाइम से दिख रहा है that Tata Steel is not good. When a particular one stock is not good in our weekly selection, we use the cash stocks weekly. Minimum I need stock strength score around 70, which is now 56 for Tata Steel. I need RS status, relative strength. इसका status relative strength compare कर रहा है निफ्टी 500 से. मैं चाहूं तो दूसरा इंडिसेस में चेंज कर सकता हूं. तो बट निफ्टी 500 मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर फॉर स्टॉक्स. सो निफ्टी 500 के अगेंस्ट ये बियरिश है एंड स्पीड स्कोर इज हेविली नेगेटिव. This is not a time I buy the stocks. I buy when the things are good and they give me good run. Now is the time I avoid. I don't know what you will do. I never ask anyone to trade based on my suggestion. I never trade on based on other people's suggestions.
So I always recommend you learn, you make your own system, make your own rules, or you are use other people's system, follow up the rules, and try to make money. Try to repeat the process over and over again, and then make money. Tata Steel is not in a phase which is going to give us money. We will avoid Tata Steel. Next is Tata Motors. It is not as bad as Tata Steel. Buy signal is there, but it is going through a correction phase. Stock speed score is less than what we desire. But after the correction, because it is sustaining above the level, जो breakout level था, once again bullish comeback हो सकता है. So what you are going to do, you are going to place either an alert speed score greater than 10, or you will place an alert which I need to buy minimum is price action bullish. So price action unless it's bullish, I can't go long. So this is Tata Consultancy Services, just like this. This is what I meant. After correction, it is sustaining above the level. After correction with this red cap, a full green candle appeared. That's a re-entry opportunity in Tata Consultancy. टाटा कंसल्टेंसी अगर देखा जाए वीकली के हिसाब से हमारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये स्टॉक को हम लोग अब डेली चार्ट में देखना पसंद करेंगे. कैश स्टॉक्स को लेस देन वीकली करेंगे. डेली चार्ट लगा रहे हैं. दिस इज लुक वीकली में ग्रीन कैंडल है अभी तक, बट डेली चार्ट के हिसाब से वी डोंट हैव. नेक्स्ट वीक कैन बी री एंट्री अपॉर्चुनिटी एंड ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है लेवल के ऊपर 4390. So I don't have a full green candle. Next week I'm going to have, which will confirm the comeback. Actually, अगर normal candle, this will after अगर इसके ऊपर चला गया, this will confirm the comeback, and we were going to have a full green candle. So this is Tata Consultancy is satisfying हमारे criteria को satisfy कर रहा है. Though right entry point may not be there immediately, next week मिलने का high probability है. But this Tata's consultancy is satisfying all three of our criteria along with this TMP criteria कि stock minimum मुझे कोई ना कोई TMP phase में चाहिए. टाटा पावर देखते हैं नेक्स्ट. टाटा पावर वीकली इज नॉट गुड. हम लोग बिल्कुल स्टॉक टर्निंग बैड. सेल सिग्नल इसमें रहना पसंद नहीं करेंगे. वी हैड अ गुड राइड, टाइम टू गेट आउट. एटलीस्ट आई विल डू पहले ही. हम लोग का सेटअप में पहले ही एग्जिट हो जाएगा एनीवे. अगर हम लोग पहले देखने जाएंगे कब एग्जिट आ रहा है, लेट्स गो बैक. थोड़ा इस टाइम से देखते हैं. ये देखिए फेडिंग बुल यूजुअली एक सिग्नल है कि इस फेज में प्रॉफिट स्टॉक ऊपर जा रहा है. यू बेटर डू सम प्रॉफिट बुकिंग. दिस इज द सिग्नल टू प्रॉफिट बुक इनटू स्ट्रेंथ. तो इस दीज सिग्नल्स आर यूजुअली कंसिडर्ड कि एक बार फ्लैश हो रहा है मतलब दे आर बैड. तो एनीवे सिग्नल चला गया. लेट्स सी कब मेजर एग्जिट आ रहा है. वंस अगेन फेडिंग बुल. स्पीड स्कोर चला गया. स्पीड स्कोर गॉन अवे. No longer satisfying our criteria since this time. Almost May, month of May, fading bull phase once again not good. We want rising, speeding or extreme bull. Short term momentum भी bearish. ये फिर से bearish हो गया. हमारा criteria, this stock is not at all satisfying almost since the month of May. ये failure चल रहा है तब से. fading bull और momentum देखिए कैसे fade हो रहा है. दिस टाटा पावर स्टॉक हम लोग मई मंथ में ये जो न्यू हाई का ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद वो फेलियर से, सिंस इट इज नॉट सेटिस्फाइंग हमारे क्राइटेरिया को, एज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया, वी विल अवॉइड दिस स्टॉक इन द वीकली चार्ट एंड स्पेशली विद दिस रेड सिग्नल राइट नाउ. दिस स्टॉक is not at all doing great. There is a comeback Tata Power, but I'm interested in the big rides, big beautiful ride like this.
if you go back, you will see the scores in time remains in my favor, so that I can ride the beautiful trend. Let's see. थोड़ा speed बढ़ा देते हैं because I think majority time it will remain favor. Now it is going up, looks like no. So it is going up. That means now it is after the only when the strong move, then only when we are getting the strong move period. Otherwise, gradual jab move ho raha hai, these are not so great times to remain in that particular stock. So this is the phase. ये जो phase है, cream phase है, उसमें हम लोग रहना पसंद कर रहे हैं. जो phase अच्छा नहीं है, more struggling phase है, gradual rising, उसमें हम लोग रहना पसंद नहीं करते. जैसे टाटा कंज्यूमर is ranging, it can go higher. इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर ब्रेक चाहिए मुझे 1200 के ऊपर सस्टेनेबली ब्रेक हायर, तो एंड विद द स्कोर्स भी सेटिस्फाइंग होना चाहिए. सो यहाँ पे एक अलर्ट डाल देते हैं 1205. ये क्रॉस करेगा, क्रॉसिंग अप, वी विल बी अलर्टेड. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाटा केमिकल्स. बिल्कुल अच्छा नहीं है स्टॉक, रेड कलर्ड, इट इज क्लोज टू इंपॉर्टेंट सपोर्ट, कंसोलिडेशन हो रहा है as not good. Same with Tata Investments, clearly नीचे की तरफ जा रहा है ये स्टॉक. और भी बैड न्यूज कुड बी ओनली TCS देख के लग रहा है दैट इज द वन स्टॉक, या टाटा कंज्यूमर का अगर फ्यूचर ब्रेक हुआ मे बी दैट वन, बट अदर कोई स्टॉक खास दिख नहीं रहा है. टाटा कम्युनिकेशन इज सेम, मेरा अलर्ट लगा हुआ है, बट स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर बहुत दूर. दिस इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रगल ऑन द वे. दिस इज टाटा एलेक्साई, और भी डाउन ट्रेंड बाकी है, चल रहा है. इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रीच कर चुका है. इसका नाम माउंटेन टॉप का ऑपोजिट ट्रेंच बॉटम, ट्रेंच बॉटम सपोर्ट के पास है. वी मे सी अ बाउंस बैक, बट दिस इज नॉट अ स्टॉक वी बाय. वी वांट ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. टाटा टेक्नोलॉजीज, दिस इज एन IPO स्ट्रेटेजी स्टॉक, अभी तक बाय सिग्नल नहीं आया, विल अवॉइड. Now this is another one which is looking interesting. After a while breaking, after important level break हो रहा है. If I look at the daily chart, तब जाके और clarity मिलेगा. Daily chart, I'll have to use cash stocks less than weekly. Then और ये reading green में होना चाहिए. It is slightly in yellow the speed. That means in this stock a buying comeback is there, but I need a strong कमबैक. 920 के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमबैक होने से स्पीड स्कोर इंप्रूव होगा एंड द स्टॉक विल टर्न फॉर द गुड. तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है दिखते हुए कि आगे बढ़ सकता है ये स्टॉक नेल्को, बट वी नीड सम मोर. ये हमारे लॉन्ग टर्म चार्ट जो है, वीकली चार्ट का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चालू हो गया. बाइंग में अभी तक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट नहीं मिला है, बट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 920 के ऊपर टू ऐड मोर क्वांटिटी ऑन दिस नेल्को. लास्ट विल बी टाइटान. टाइटान में एक अर्ली डाइवर्जेंस दिख रहा है. यहां पे मोमेंटम डाइवर्जेंस है. मोमेंटम डाइवर्जेंस देखने के लिए आप सेटिंग्स में जाइए, डाइवर्जेंस क्लिक कीजिएगा, and you have, this is a divergence happening. So divergence are early signal, early potential. Titan के लिए potential हो सकता है. Maybe the decline in gold custom duty could be an effect for Titan, but I won't focus too much on fundamentals anyway. I'll focus on this model. The current comeback has failed with this red candle, but buy signal is still prevailing. I don't have a sell, so I'll closely watch, keep a check on Titan, because just because of risk reward, it is sustaining above this very important flat line 3380, और इसके ऊपर sustain कर रहा है. This can be a new comeback for Titan, but I need more potential energy. Stock का strength score, these are not satisfying. I need a full green candle
but Titan will remain in my second level of radar. Current level of radar में list stock select हो चुका है. One is TCS, another is Nelco. Future opportunities के लिए नजर है on Tata Consumer, on Titan. So that's all friends. I hope this discussion was helpful to you. अगर help हुआ है, don't forget to like my video. All the best to you, and as always, happy trading.